हेलो वेलकम बैक टू Campuswala, वन स्टॉप फॉर ऑल कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं B.Tech फ्रॉम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। Before starting, I request you all to please subscribe to our channel and don't forget to press the notification icon so you won't miss any updates from the videos. So I get started. BMS College of Engineering is ranked 5th by the India Today in 2023 under the engineering category, 5th by the Times in 2023 in the engineering category, and 24th by the India Today under the engineering category. Established in 1946, BMS College of Engineering, popularly known as BMCSE, is located in Bangalore. This reputed college is accredited by NAC with A++ grade and NBA. The college has been approved by AICTE and UGC. NI ranking की बात करें तो they ranked 104th in the engineering category. बात करते हैं इनके B.Tech प्रोग्राम के बारे में। So BMS College of Engineering offers a 4 years BE course across 17 specialization and is taught through the Department of Civil Engineering, Chemistry, Biotechnology, Computer Science and Engineering, etc. Admission to this course at BMS College of Engineering is based on KCET COMAT entrance test followed by counseling sessions of the respective entrance test. बात करें फीस के बारे में। So for civil engineering it is 3 lakhs, for electrical and electronics engineering it is 4.5 lakhs, for industrial engineering and management it is 4.5 lakh, for electronics and communication engineering it is 6 lakhs, for mechanical engineering it is 3.5 lakhs, for computer science and engineering it is 10 lakhs, for chemical engineering it is 2 lakhs, for biotechnology it is 4 lakhs, for aerospace engineering it is 4 lakhs, for artificial intelligence and machine learning it is 7.5 lakhs, for artificial intelligence and data science it is 7 lakhs, for computer science and engineering and data science it is 7.5 lakhs, for computer science engineering, internet of things and cyber security including blockchain technology it is 7.5 lakhs, and computer science and business system it is 7.5 lakhs. बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। सो मीडियन पैकेज इनका गया है 8.4 LPA। टॉप रिक्रूटर्स आर इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, हेक्सोवेयर, लिप्सिस, एमडेल एंड यूनिलॉजिक। ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल अभी आपके पास आ रहा होगा कि हमने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया फिर हमारे ड्रीम कॉलेज का एडमिशन नहीं मिल पाया ड्यू टू एनी रीजन। क्या उन स्कोर्स के बेसिस पर पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हमें कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकते हैं? वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है? वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्या वहाँ स्पेशल सीट या मैनेजमेंट सीट अवेलेबल है या नहीं है? इन सारे सवालों के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हमारे काउंसलर्स आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गाइड करते रहेंगे। दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस और रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द colleges which are available to you as an option according to the scores which you have got in the entrance exam and related to the special seats and management seats available in the colleges. They will let you know each and every information. All you have to do is just to give us a call on the helpline number. So thank you so much for watching. See you in another video.